Big focus today is, of course, the polling that's already underway in the hill state of Himachal Pradesh. The voting is taking place for all the 68 assembly seats in the Himalayan state. The hill state is poised for a keen electoral contest, with the Bharatiya Janata Party hoping to reverse the historical voting trend. There's been a trend of high anti-incumbency in the state, and the vote every 5 years over the past 4 decades has in fact voted for the opposition party. But this time the BJP is banking on twin attractions. One is the double engine Sarkar, and the other is Prime Minister Modi's personal appeal for a vote for the lotus symbol. On the other hand, the Congress party seems to be relying heavily on history and the historical voting trends as well, so much so that Rahul Gandhi completely skipped the Himachal Pradesh campaign. Yet nothing is off the table, with the entry of the third party, the Aadmi party, which would be hoping to replicate a Punjab-like result in its favour. Is that too optimistic? Well, the experts are divided on that too. Now, of course, we keep our focus on the current polling trends. In fact, Times Now also spoke to Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur, who led the Bharatiya Janata Party campaign in Himachal Pradesh. Listen in to his take on the elections set to take place, which is in fact already underway now, since polling began at 7 a.m. So you have been there on ground from day one, campaigning rigorously. What is the experience that you have gathered, and also what pulse that you have seen on ground so far, sir? If you look at the last 5 years of Bharatiya Janata Party government here, we have seen that many projects have been delivered which were hanging for the last good 5-7 years during the Congress rule. People have seen a change, how effective the double engine government was. They have seen the kind of support we have got from the Modi government. And Prime Minister Modi has been very, very kind towards Himachal Pradesh, not only during the BJP rule, but even during the Congress rule. But Congress was not willing to implement all those projects on ground, and Himachal suffered because of that. And I think in these 5 years, we have seen that how Himachal has progressed, especially in the last 5 years. Sir, when we talk about Agneepath scheme, we have heard Defence Minister Rajnath Singh also clearing all the misconceptions surrounding it. But the opposition, specifically the Congress party, have been attacking over it and saying that this particular scheme is there to manipulate the youth and mislead the youth. We have seen, during the Agneepath overall employment time, how many people came forward. There were 5 times more people who came for the Agneepath recruitment. Now for Agneepath recruitment, if the 5 times more people came, that clearly shows there is a lot of interest among the youth. A lot of people try to create the, misinform them, mislead them. But fortunately, the youth of Himachal Pradesh is very, very educative, very aware, and they know what to do in life, and that is why they got. Well, Times Now is in fact reporting from multiple locations where the polling is already underway, and Savyasachi, Gurpreet, Manoj as well as Kundan are joining us on the broadcast. Let me in fact go across to Gurpreet first and foremost, who's reporting now from the constituency of late Veerbhadra Singh, the former Chief Minister. Gurpreet, what's the sense on the ground that you're getting there? What's the polling been like so far? Well, we can see these pictures from the temple where Vikramaditya along with Pratibha Singh, they are worshipping, and what we have learned from them, they after worshipping they are going to cast their vote. So these pictures are having a lot of importance as of now. If we can talk about the elections, we have seen all the netas, whether it's the Jairam Thakur as well as Vikramaditya along with Pratibha Singh, they have already been going to temple to worship before going to cast their vote. So they have a
high hopes for the election scenario. We had a word with Pratibha Singh. She has already said because there is no development which was done by the BJP, and this time because of that the people are more frustrated and they are hopeful the Congress will come back into power. So we can see these pictures once again. I'll request my Vijay to zoom in and show these pictures that how the worship is going on in the temple near in Rampur Basher, where this is the their own constituency where they are going to cast their vote, and before casting their vote we have seen that they are worshipping here, and from this temple after worshipping they are going back to cast their vote. So a lot of first time there is a tripolar competition which is happening here. We have seen Aam Aadmi Party, they had also going to contest, and they are also trying to seek some of the seats. So they are hopeful for this thing. But here, if we can talk about Rampur Basher, for the last 35 years, we have seen the Congress was ruling here, and this is belong to Veerbhadra's constituency, and here they are not in a position to cast their vote. So once again, I'll request my Vijay to show these pictures here. So we will also try to talk to Vikram Aditya Singh, who is also present here. So sir, we have Vikram, you are hopeful this time the scenario will be changed? Sorry? You are hopeful this time the election scenario will be changed? We are very optimistic, very positive, because the people of Himachal Pradesh has given us a lot of energy in the last 15-20 days of campaigning. We have seen the enthusiasm, the response of the people, which will be converted into into votes today, and we will form a government with a thumping majority. Vikram, we have seen every time BJP is leveling allegation about the dynastic politics in Congress. Do you think that if somebody from outside your family will be the chief minister of Congress? These allegations are absolutely baseless. My family has been in active politics for over 6 decades, and we have been continuously getting the support of the people of the state. My father remained 6 times chief minister, 5 times MP, and 3 times central minister, 9 times MLA. It is because of the wish of the people. So we believe in democracy. Whatever the people of the state decide, Rahul Gandhi is missing. A lot of issues are being raised by the BJP. Rahul Gandhi is missing from the screen. He did not come for the campaign. How do you see? Do you think that there will be impact? I have already said Rahul Gandhi ji is on a very important mission to unite the country, and he has been traveling from south to north of country. And whenever he has been invited, he's always come here. His sister Priyanka Gandhi Vadra, who is the general secretary of the party, she has campaigned extensively for the party in various districts of the state, and she has given a lot of momentum to the party. And Rahul Gandhi ji will come here for the oath taking ceremony. BJP says that a double engine sarkar is required. Yes. BJP is saying double engine sarkar is required. Double engine sarkar is failed. Double engine sarkar is going to go down the hill, and we are going to work with the single engine sarkar of Himachal Pradesh with the support of central government. Well, we can see this is Vikram Aditya. He says that this time double engine sarkar will not work for Himachal Pradesh because BJP has failed from all the front to make a proper development of the state, and they are very hopeful for getting and winning the elections. And they say in Himachal Pradesh there is a tradition, one time the BJP, another time the Congress, and this time they believe the people are very frustrated and they will definitely repeat the same tradition here in Himachal Pradesh. Back to studio. Right, many thanks for that, Gurpreet. An interesting interview there with the son of Veerbhadra Singh, Vikramaditya Singh. Let me in fact go across now to Manoj, who's coming to us from Mandi. Manoj, पिछले साल जब बाइपोल्स हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तभी बीजेपी को एक धक्का लगा. मंडी में वो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर वो हार चुके थे, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने उसके बाद कहा है कि काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ है और इस बार पार्टी के चांसेस अच्छे हैं मंडी में. आपको क्या सेंस मिल रहा है वहां से? बिल्कुल, देखिए मंडी में जरूर बाईपोल में बीजेपी को शिकस्त मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को कम से कम लगता है कि वो दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे. और ये जो रवायत है, जो एक परंपरा रही है हिमाचल प्रदेश की, हर साल 5 साल बाद जो सरकार बदलती है वो इस बार टूटेगी. और इस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर मतदान करने के बाद बाहर सेल्फी पॉइंट पर आप देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हुए हैं. जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, उनके साथ
उनकी धर्मपत्नी साधना ठाकुर, बेटियां हैं दोनों चंद्रिका और प्रियंका, उन्होंने भी वोट किया है। तो यहाँ पर सेल्फी खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। मुख्यमंत्री जी, मतदान तो कर दिया आपने? जी, मतदान कर दिया, बिल्कुल कर दिया। क्या अपील करेंगे प्रदेश की जनता से सर? मैं प्रदेश की जनता से यह अपील करना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी जो भूमिका है उसको आप निभाएं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें। पहले भी आपने जिक्र किया है, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको हिमाचल प्रदेश में? अच्छा माहौल है, सब जगह से खबर सुनने को मिली है और अच्छा रुझान चल रहा है। मैं अभी कनेक्टेड हूँ सारी चीज़ों को से लेकर के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह से रिपोर्ट आ रहा, बहुत अच्छा रुझान हैवी पोलिंग की तरफ हिमाचल पड़ रहा है। मतदान केंद्र पर भीड़ कुछ कम दिखाई दे रही नहीं, अभी सुबह के दौरान थोड़ी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद अब शुरू हो गई है। मंडी बाईपोल में जो शिकस्त मिली थी बीजेपी को, सर क्या देख रहे हैं, उसका असर रहेगा? लेकिन वो हो गया दौर, वो सारा श्रद्धांजलि और इसके नाम पर हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ठीक है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर टाइम्स नाउ से खास बातचीत में बता रहे थे कि इस बार जो बाईपोल में था वो एक दौर था जो गुजर गया, वो एक सहानुभूति फैक्टर था जो चल रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ मंडी में और खासकर सराज में, जो कि 5 बार लगातार जीत चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, यहाँ से फिर से वो जीतेंगे। जी, Many thanks, Manoj. In fact, well done to get the Chief Minister, Mr. Jairam Thakur himself, who just cast his vote there a short while ago along with his family. Let me also go across to Sabyasachi, who's been in Himachal Pradesh for quite some time now, closely monitoring the build-up to the elections, and he's now reporting from Bilaspur, which is, of course, part of the stronghold of Anurag Thakur, the Hamirpur constituency, the Lok Sabha constituency. What's the sense on the ground that you're getting there, Sabyasachi? Well, Siddharth, definitely it's a stronghold of the BJP, but this time around the battle is very intense between the BJP and Congress. For BJP, the major problem in Bilaspur, if you talk about, is the rebel problem, because the ticket this time around has not been given to the candidate who has won the 2017 election, Subhash Thakur. This time around the ticket has been given to Trilak, who was the advisor of CM Jairam Thakur. Well, from the morning, people are coming in to cast their vote. We'll talk to them to get to know what is the pulse that is going on ground. Sir, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार के मुद्दे क्या हैं आम जनता के चुनाव में? ठीक ही है सर। मुद्दे क्या है, कोई परेशानी है? नहीं सर, कुछ नहीं है, बढ़िया है, बड़ी चलो। आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के? सब ठीक है। सब ठीक है। सर, आपसे भी पूछना चाहूंगा इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या आम जनता के बिलासपुर से? ठीक चला हुआ है जी, ठीक है। महंगाई सब ठीक है? तो जो है सबके साथ है जी। जी, महंगाई ज्यादा है, वो नहीं है, वो कम हो जाए तो अच्छी बात है, आम आदमी बेचारा वो कर लेगा। महंगाई कम हो जाए तो अच्छा होगा। ज्यादा कम हो जाए, कम हो जाए। भैया, आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार बिलासपुर के जनता के? बढ़िया चल रहा है जी। मुद्दे कुछ नहीं है? नहीं। आप क्या कहेंगे? सर ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, इस बार के मुद्दे क्या हैं आम जनता के बिलासपुर से? सब कुछ ठीक चला हुआ है जी, बाकी थोड़ा महंगाई है, काबू हो जाए तो अच्छा ही है। महंगाई थोड़ी काबू हो जाए, थोड़ी काबू हो जाए तो अच्छा ही है। Well, Siddharth, there you go. This is the pulse that we are getting from Bilaspur, whereas in some time BJP President JP Nadda himself will be coming here along with his family to cast his vote. And this is a battle for prestige for the BJP, because on one hand, Bilaspur is the home turf of JP Nadda, because in 2007 he has won the MLA seat from here, and also Bilaspur falls under the Hamirpur constituency from where Anurag Thakur is the MP. So all the bigwigs of the BJP had campaigned thoroughly in Bilaspur day and night, be it JP Nadda, Anurag Thakur and other leaders as well. So clearly this time around the battle is going to be very intense, because on one hand the BJP has fielded a new candidate, and the rebel candidate is fighting on an independent seat. So here the question arises whether there would be a divide in the vote share or not. For that we have to wait and see, but as of now people are slowly coming in to cast their vote.
Right, many thanks for that, Sabyasachi. An interesting perspective from the voters there as well. They're all appearing to keep their cards very close to their chest. Let me, in fact, also go across to Kundan, who is joining us from the Hamirpur Assembly constituency. Once again, part of the Lok Sabha segment of Hamirpur, which has traditionally been a stronghold of Anurag Thakur, the constituency he now represents in Parliament. Kundan, वहाँ का माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल माहौल काफ़ी टाइट है और आपको बता दें कि ठीक थोड़ी देर बाद करीब 9:30 के करीब में खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पिता प्रेम धूमल के साथ, जो कि यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं और लास्ट इलेक्शंस में 2017 में वो एक तरह से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन खुद के चुनाव हारने के बाद उनसे वो सीटें या वो पद जो है जयराम ठाकुर को दे दिया गया। सुबह से काफी लोगों की भीड़ थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार बाकी चुनाव से थोड़ा अंतर जरूर है, क्योंकि लोग जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, हालांकि आम आदमी पार्टी का बहुत खास इंपैक्ट खासकर इस इलाके में नजर नहीं आ रहा, लेकिन वोटर के पास एक ऑप्शंस के तौर पे आप जरूर देख सकते हैं। और लगातार हमने लोगों से बातचीत की और कहा कि आपके कौन से इश्यूज है जिस पे आप अपना वोट कास्ट करें। उसमें ज्यादातर लोगों का कहना था कि प्राइस राइज एक बड़ा इशू है, बेरोजगारी एक बड़ा इशूज है और डेवलपमेंट फ्रंट पे बहुत बड़ा इशूज है। और मुझे लगता है कि जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि डबल इंजन की सरकार यानी सेंटर स्टेट की दोनों मिलकर जो सरकार का कॉम्बिनेशन से, हमने देखा कि टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से कहा कि नरेंद्र मोदी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। और इससे पहले भी जब 14 से 17 के बीच में जब यहाँ पे वीरभद्र सिंह की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो तमाम सेंटर्स के प्रोजेक्ट दिए गए थे वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काम नहीं हुआ था। और इसके बाद जब 17 में बीजेपी जयराम सिंह ठाकुर की सरकार हुई थी, तब एक तरह से डेवलपमेंट काफी आगे हुआ था और जिस डेवलपमेंट की सीरीज को हम और आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक ट्रेडिशन रहा है करीब 4 दशक से ज्यादा कि यहाँ पे हर 5 साल बाद सरकारें रिपीट हो जाती हैं और कांग्रेस को ये लगता है कि 5 साल का इनकी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर्स और दूसरे जो तमाम फैक्टर्स है, प्राइस राइज से लेके अग्निवीर से लेके और ओपीएस जो वन ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेके कांग्रेस बहुत पुश कर रही थी, क्योंकि ज्यादातर वर्किंग स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बहुत रहते हैं, रिटायर्ड लोग रहते हैं या फिर वो लोग जो आगे सरकारी नौकरियों में इस उम्मीद से जा रहे हैं कि राज्य सरकार में सरकारी नौकरी कर सके, उनके लिए एक लुक्रेटिव चीज हो सकता है। और इसके अलावा जो यहाँ की महिलाएं हैं उसके लिए जो 1500 का एक पेंशन स्कीम्स है वो लेके तमाम कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी है कि हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी रैली नहीं की गई, बड़े नेता नहीं आए, खुद राहुल गांधी ने एक भी यहाँ से रैली नहीं की, कुछ एक रैलियां जरूर प्रियंका गांधी ने की थी। सो उनकी कोशिश है कि कम से कम इनसाइड अंदर ही अंदर एक तरह से करंट लिया जाए और जो एंटी इनकम्बेंसी प्राइस राइज वाले इश्यूज को लेके एक बार कम बैक करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुआ था हिल स्टेट से। सर्दियां हालांकि पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन हल्की हल्की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और बीते जो लास्ट 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो क्रॉस करने की उम्मीद मानी जा सकती है। जी शुक्रिया उस पर्सपेक्टिव के लिए कुंदन। और let me in fact go across to Sabyasachi right now. Sabyasachi, of course you're reporting from Bilaspur, which like you said is also a stronghold of JP Nadda. He hails from the state of Himachal Pradesh, but this time around the buzz, at least as far as the Congress party is concerned, has been fairly low given the fact that Rahul Gandhi has not campaigned in this elections. He's been preoccupied with the Bharat Jodo Yatra in another part of the country. What's the sense that you're getting on the ground with respect to the Congress's campaign in that part of Himachal Pradesh? Well, Siddharth, definitely it is a major factor that Rahul Gandhi was not seen during the campaign. And as per the sources, lot of the Congress leadership from the state had asked Rahul Gandhi time and again to campaign here. But the request were denied and Rahul Gandhi did not campaign in the state of, in the hill state. And also few days back we had seen that around 26 of the Congress members had left Congress and joined BJP. So definitely it is going to hurt Congress somewhere, but clearly here in Bilaspur, in every 5 years, the people have this tendency of shifting powers. From 2007, JP Nadda had won, 2012, Congress had won, and again in 2017, BJP had won. So the Bilaspur seat, though it is a very prestigious seat because of the BJP president's home turf, but the people have this tendency of shifting powers. But this time we have to see whether whether BJP will
retain their seat here, or the Congress will be able to bend the trend. We'll get some reaction from the people out here. आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, क्या अहम मुद्दे हैं? अहम मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं, कोई परेशानी आप 5 साल में चाहते हैं कुछ चीज सुधार हो, काम में सुधार हो? काम में कोई नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बीजेपी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? मुद्दे तो कोई खास नहीं है जी, और जो भी काम हो रहा है हमारे इलाके में बहुत बढ़िया हो रहा है, और जो सरकार इस टाइम हमारी प्रेजेंट में है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमें उम्मीद है आगे भी इनसे कि ये ऐसा ही काम करते रहेंगे और हमें इन्हें सेवा का मौका देते रहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है जो इन्होंने बोला, यही है सेम, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम हो रहा है सब ठीक है, और आज तक जो भी काम हुआ है वो हमारी जनता पार्टी ने ही किया। ठीक है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात? मैं ऐसा यूँ कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रोड है बीजेपुर टू वाया प्ले, और इस रोड को निकलाओ, हम ये वोट डालने तो आ गए, और जो ये कुटियाल साहब है काम कोई नहीं करवाया इन्होंने इस इलाके में। रोड की परेशानी है? रोड की परेशानी है जी सबसे ज्यादा। Well, Siddharth, there you go. That road connectivity is a major issue that we see in the hill state, and because to travel over 2 minutes, it takes around 20 minutes to 25 minutes time, and also in some of the remote areas here in the state, there is not even proper road. So definitely this is one concern that the local people express. But here in Bilaspur, it's going to be very interesting, because as the trends show, people have this tendency of shifting powers. But the BJP is confident. They have campaigned road connectivity, a serious issue. One of the voters there brought that issue out. Thanks for that, Sabyasachi, and all our reporters. We'll keep coming back to you. Slipping into a break just for the time being. We'll see you on the other side.